So in lower Paleolithic we have Oldowan tools, we have Abavelian, we have Acheulean tools, we have Clactonian tools, and Levalloisian tools. ठीक है? See, these three are core based tools. These two are flake based tools. ठीक है? Core based tool, flake based tool. So core based tool, that means core is used as the tool. Oldowan tool draws from Olduvai gorge. Okay, Olduvai gorge, and main tool type is chopper and chopping. ठीक है, chopper and chopping tool, you can say this is chopper, अगर दोनों साइड में वो आ जाएगा तो chopping. ठीक है, Abavelian, these are, you can say the name is derived from, इसका एग्जाम्पल इंडिया में मतलब यूनाइटेड इंडिया में सॉन. ठीक है, Abavelian बेसिकली क्या है, सेंट एबावेल फ्रांस में से एक साइट है. ओके, उसी के नाम पे Abavelian. सो दीज आर क्रूड हैंड एक्सिस, लार्ज साइज्ड हैंड एक्सिस. ठीक है, क्रूड एंड लार्ज साइज्ड हैंड एक्सिस. ओके, Acheulean आर लिटिल रिफाइंड हैंड एक्सिस मेड ऑफ फ्लिंट. ठीक है, काफ़ी रिफाइंड हैंड एक्सिस थी, that is Acheulean. Now Acheulean hand axis cleavers, they are found in the Madrasian culture in India, they are found in Bhimbetka in India, right? Okay, so Acheulean culture. Clactonian is derived from Clacton on Sea, that is found in Britain, UK. Levalloisian is derived from Levallois Perret, a site from France. Levallois Perret, a site from France, and here we have Levalloisian technique. ठीक है, in which we have first we prepare a core and then we remove flakes from that core. ठीक है, first we prepare a core completely, we remove all the weaknesses from that core. सब कुछ रिमूव कर लिया, and then you will hit it from here to remove a particular flake, right? So this, when you take it out, it is like this, right? And you will touch it up also using stone hammer technique, this cylinder hammer, and then it will become very sharp edged. This can be used for scraping the bark, removing flesh from the bones, scraper. Sometime it come out as a point, sharp point. ठीक है, it can be used in the spears etc. Okay, that is Levalloisian. Levalloisian technique was further taken up in the middle Paleolithic. Okay, that becomes Levalloisian Mousterian technique, right? Mousterian technique is derived from the name of the place La Moustière in France. ठीक है, अब इसमें देखो Oldowan tools, probably these were made by Australopithecus, but definitely by Homo habilis. Probably by Australopithecus and definitely by Homo habilis. If we talk about Abavelian, Acheulean, they are, or all these four, ठीक है, these two definitely by Erectus, this is also by Erectus.
Lavolution, Mostier, because Mousterian is associated with Neanderthal, right? So Lavolution, Mousterian basically was by Neanderthals, ठीक है, क्योंकि it is in the fag end. You know that Neanderthals around, they are around 2 to 3 lakh years old. 2 लाख तो है ही हैं, 2 लाख साल पुराने. So ये इतनी पुरानी है Lavolution टेक्निक, जो Lavolution जो मेथड है. So Lavolution belongs to Neanderthals. जब भी किसी भी टूल के बारे में या किसी पीरियड के बारे में, so in lower Paleolithic who was the which species was there? So you can say Australopithecine, Homo habilis as well as Erectus. ये तीन तो डेफिनेटली थी इसमें, राइट. इवन द नर्मदा मैन, सो नर्मदा में जो टूल ट्रेडिशन है दैट इज ऑल्सो इरेक्टस से एसोसिएट करते हैं, ठीक है, ओके. एंड यू नो दैट आफ्टर 1 लाख ईयर्स तो हमारे पास निएंडरथल था, राइट. अपर पैलेलिथिक दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 40,000 ईयर्स अगो, इन दैट टाइम पीरियड वी हैव मॉडर्न ह्यूमन, ठीक है. सो लोअर पैलेलिथिक इज डन. In middle Paleolithic, in middle Paleolithic you have the use of cylinder hammer technique only. You make the Mousterian tools, ठीक है, flake based tools. In upper Paleolithic, that is Aurignacian culture, Solitarian culture, Gravitanian culture, right, the Megalomoisian culture, ठीक है. सो ये सारे आपके कौन सा था, ये इनडायरेक्ट टूल टेक्निक, दैट इज पंच टेक्निक इन विच ब्लेड, टूल, नाइव्स एटसेट्रा वर देयर, राइट. देन Agilian culture, then Megaladinian culture, okay. This is middle Paleolithic culture of यूरोप, राइट. दिस इज इवन, हाँ, इसमें आप नेटुफियन कल्चर भी आपका यही वाला है, ठीक है. नेटुफियन कल्चर जो क्वेश्चन आया था वो भी आपका मिडल मेसोलिथिक कल्चर ही था, वो भी आपका, ठीक है, अराउंड 12 to 15,000 ईयर्स अगो. और ये तो आपका नियोलिथिक कल्चर्स, ठीक है. नियोलिथिक कल्चर इज एसोसिएटेड विद द सेटलमेंट, ठीक है. You can say agriculture and settled living. So I believe you can do it. These techniques, ठीक है. पंच टेक्निक, ब्लेड टेक्निक, ओके. इंडिया की साइट्स के नाम आप देख ही लोगे.